that a young guy like me, a young chap like me, has got such an opportunity to take interview of such an influential person like Honorable Mayor of Jammu and Jammu, that is Rajinder Sharma. That is so obvious. That is because of my dad, because Mayor Rajinder Sharma ji and my dad, they were in the same school, Sainik school. So just because of that, I've got a chance of taking his interview. And trust me, I mean, yesterday this should have been included in the interview, but I would, as these guys are batchmates. Yesterday, Dr. Brigadier Vijay Sagarji specially called me up, and he was like, "Beta, Rajendra Sharma ji is coming. He was my junior, so do you mind if I interview him? Please, it's a request." So I was like, "Sir, no, sir, because you've already spent hell lot of time with him. You know him in and out, right? So I would never miss a chance, interviewing such an influential mayor of Jammu, that is Rajendra Sharma. How do you expect me to miss a chance of interviewing him? I mean, and thank you so much, sir. I'm highly obliged from your schedule, your hard schedule. I know you don't have a single minute, sir. You are so busy. You're so busy. I'm highly obliged that you took out time for us, sir. Right, sir. So, if you don't mind, shall we start, sir? Sure. So, okay. So, firstly, I would like to say, I trust in the present, right? Neither the past nor the future. I focus on the present, that is today, right? And trust me, sir, I am it's not that I am giving myself a upper hand or something, but I have an attitude that I have got a habit of keeping an upper hand. Trust me. It's just that you are my dad's friend and you were into same school. Don't take me wrong. Don't take me wrong at all, sir. I'm quite junior to you. I'm like your child, right? But I've got a habit of keeping an upper hand. But my dad specially told me to go smooth with you, because he was like, we were in same school, so just go smooth with him. I was like, sure, dad, I'll surely go smooth with him. So, firstly, I would tell people that your group as in your committee, the group you have as in Swachh Jammu Abhiyan, you're taking care of Swachh Abhiyan. Your achievements are up to the mark. My town, my pride. I don't know. If I would start taking out names of the achievements you've done, it's gonna take me more than an hour. So I would just specify some of them, like my town, my pride, International Anti-Corruption Day, Constitutional Day, fogging drive, clean and green Jammu. This all is done by you, and trust me, no one takes such an initiative. But you are doing this, and I'm highly obliged. And our TNL, our team is highly obliged by you. The initiative you are taking, okay, sir. And it's for the first time I'm taking an interview. To be honest, wherever I am wrong, you have got the right then and there to stop me and tell me you're wrong, right, sir? So, but according to me, the chairman, Public Health and Sanitation Community is run by Arun Khanna, am I right? Okay. And the community, the chairman of Swachh Bharat community, again, there's a guy named Gopal Gupta. What is his job function, sir? He is the chairman of this committee. He's a Chairman of this committee. So he's a chairman. All right. Okay. And then municipal commissioner Rahul Yadav. I've heard he's an IAS officer. That's what.
A great team. Friend of mine, very close friend of mine. A very close friend of yours. Yeah. All right. Good. Okay. And then health sanitation wing headed by health officers and assisted by 2 sanitation officers and 4 assistant officers. What else do you need? You have got such a brilliant team, but still, sir. I mean, out here in Jammu and Kashmir, we do have private organizations as well who are, into. I don't know what their motto is, what their modus operandi is, what their processing is. उनकी सोच क्या है, sir? So I have to be, I have to keep such an adaptation because I don't want this interview to, just, I don't want few of Jammu people to, just have a look at this interview. I'm not saying that Jammu people don't understand English, but there are so many rural areas here in town जिनको अभी समझ नहीं आएगा हम क्या बात कर रहे हैं. So I would balance it, I would mix it. मैं हिंदी में भी बात करूँगा जिससे जो एक आम आदमी है जिनको समझ नहीं है उनको भी समझ आए कि क्या बात हो रही है. If you don't take me wrong, can I talk in Hindi as well? Yes, For sure. that is your prerogative. All right, that is my prerogative. Oh, thank you so much. सर अब मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा मेन वो है स्वच्छ जम्मू अभियान सर. ठीक है ना सर? सर इनिशिएटिव तो इतने सालों से लिया जा रहा है सर, मगर सर बदलाव क्या है? बदलाव तो सर मेरे ख्याल से, आई माइट बी रॉन्ग, आई एम क्वाइट यंग, मेरे ख्याल से बदलाव तो सर है नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब अगर आप एक घर को ले लीजिए, एक घर में लोगों ने नौकर रखे हुए हैं, वो अपने नौकरों से घर पे 5 बार झाड़ू मरवाते हैं. लॉबी साफ़ करो, कमरा साफ़ करो, ये साफ़ करो, मगर उनको इतना ध्यान नहीं है कि वही सफाई करके वो कूड़ा बाहर स्ट्रीट्स में फेंक देते हैं. दे डोंट हैव मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कूड़ा उठा के बाहर डस्टबिन में फेंकें. मगर एक बार एक बंदे से पूछा गया कि जी आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो आगे से वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर डस्टबिन ही नहीं है. एंड आई डू गेट योर पॉइंट. यहाँ पर यू हैव गॉट सो मैनी लेन्स इन टाउन. यहाँ पर इतनी लेन्स हैं, अकॉर्डिंग टू मी मोर देन लाख लेन्स, राइट? 1 लाख से ज़्यादा रोडें हैं यहाँ पर. अब हम 1 लाख तो वो लगा नहीं सकते, मगर सर इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना सर, किसी ना किसी को. एंड 370 आर्टिकल तो सर हट गया है. अब इसमें जम्मू खुश हो या ना खुश हो, एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव, राइट सर? इसके 370 हटने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. लोग सिर्फ नुकसान देख रहे हैं. इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सर. कॉग्निटिव थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है सर, ध्यान से सुनिएगा सर. आप मेरे से बहुत बड़े हैं, मगर जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ना 100% से जब आप गाड़ी में जाएंगे ना, आप कहेंगे सर इस बच्चे ने जो बोला ना, सर एक ग्लास है सर, ठीक है? उस ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी, तो 2 लड़के वहाँ बैठे हुए हैं. तो एक से पूछा जा रहा है कि क्या है ये, वो एक का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ग्लास आधा खाली है, और दूसरे से पूछा जा रहा है कि इस ग्लास में क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ग्लास में इतना पानी है, इससे मेरा काम चल जाएगा. तो हम 370 आर्टिकल हट गया है, चलो ठीक है हट गया है, मगर उसके फ़ायदे तो लो. सेंटर में इतना जानता हूँ कि अगर आप यू आर so versatile, you are such a dynamic personality. I am not at all flattering you because you are my dad's friend, trust me. I am a straightforward guy sir. मुझे इतना पता है, अगर सेंटर में जाके आप यहाँ के बारे में, अगर यहाँ स्वच्छ जम्मू अभियान के बारे में बोलेंगे ना, तो एक्सपेंसेस वो खर्चा करने में नहीं होगा. मगर बात वहीं आ जाती है. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर 100 रुपया दिया जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो खर्चा सिर्फ 40 जाएगा या 60 जाएगा, 40 रुपये पता नहीं कहाँ जाएंगे। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है सर, ठीक है ना सर। बाकी अब सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, अ बिट चेंज, कि रोडों पे कूड़ा कम हो जाए। मतलब लोगों को इतना परवाह नहीं है, लोग अपना घर साफ़ करने में लगे हुए हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, कोई मैकडोनल्ड से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, गाड़ी खोली, फेंक दिया बाहर, उनको ये नहीं पता ये अपना शहर है। सर अकॉर्डिंग टू यू सबसे स्ट्रिक्ट, विच इज़ द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आपके हिसाब से? चलो छोड़ो सर, दुबई। वाई दुबई? क्योंकि दुबई में वहाँ के लॉज ऐसे हैं कि अगर आप कूड़ा फेंकोगे तो फाइन है। मगर हमारे जम्मू में क्या है? हमारे जम्मू में आप लोगों को देखोगे तो रोडों पे वो दे आर यूरिनेटिंग ऑन द रोड्स। व्हाट इज रॉन्ग विद पब्लिक हियर? तो कुछ ऐसा किया जाए कि, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि कूड़ा फेंकने में फाइन होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो बंदा यूरिनेट कर रहा है रोड पे उन पे तो आप फाइन लगा सकते हैं ना सर। ये नहीं कह रहा कि जैसे ये हमारे सेंटर ने कर दिया है, इन्होंने पूरा अपना ट्रैफिक का चेंज कर दिया है, लाइसेंस नहीं होगा तो 10,000 का वो, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन फाइन देम 100 रुपीज़। क्योंकि मुझे ये भी पता है जो यूरिनेट करते हैं वो बंदे करते हैं जिनके जेब में या तो 50 रुपये होंगे या 100 रुपये होंगे। तो मैं उसी मोटो से कह रहा हूँ, तो हम उतना ही रख सकते हैं कि अगर आप यूरिनेट करेंगे जी 50 रुपये फ़ाइन है, 100 रुपये फ़ाइन है। क्योंकि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली वुड नेवर गो ऑन अ नुक इन कॉर्नर फॉर यूरिनेशन। पब, ठीक है ना सर? या सर, गिव हिम अ चांस। क्या इट्स ऑल इज विंग, या इट्स ऑल इज विंग सर। अब आप मुझे बताइए सर, अब आप मुझे बताइए बेटे के नाते, या आप अगर मुझे इस समय चेयरमैन, डिप्यूटी एडिटर न्यूज़पेपर का समझ रहे हैं उसके नाते, ये आपकी मर्ज़ी है। मुझे आप बताइए ऐसा क्या करेंगे आप कि जिससे आने वाले वक्त में बदलाव देखा जाएगा? देखिए, जो भी आपने कहा है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे ध्यान में हैं, और आपने देखा होगा सैनिटेशंस को लेकर हम बहुत ही सचेत हैं। एक समय था जब यहाँ ऑटो की सर्विस नहीं थी, आज ऑटो की सर्विस है। ऑटो आता है सुबह और लोग उसमें कूड़ा डालते हैं। सफाई साथी बेल भी करते हैं और उन्होंने स्पीकर भी रखा होता है। लोगों को सर्विस मिल रही है। आज की डेट में 350 मीट्रिक टन हाउस होल्ड वेस्ट हम उठा रहे हैं। सर कैन यू कम अगेन सर, आप रिपीट कर सकते हैं, क्या बोला आपने? 350 मीट्रिक टन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, राइट सर, हम उसको कैरी कर रहे हैं आज के दिन में। ऑलराइट सर। दूसरा ये है कि आपने कहा रिगार्डिंग स्वच्छ भारत, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? स्वच्छ जम्मू सर, वी फोकसिंग ऑन जम्मू। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन टेकन? राइट सर। You see, स्वच्छता starts with the civic sense. Very true, civic sense, I get it. Very true, sir, very true. तो civic sense सब में होना ज़रूरी है. It is not like that if I eat banana, I will throw the peels on the road and I will say municipality will clean it. That is not the way. Exactly. Right. If I eat banana, then the peels has to be disposed of properly. By the person who is eating the banana Yes. itself. Now, if I broom my room, Right. I have to collect waste and keep it for the time
and dispose of in in the auto when it comes. Right, sir. I need not throw it on the roads or put it in the dustbin. I should wait for the auto. So this is a civic sense. Sir, एक मिनट सर, एक मिनट. Do you mind if I interrupt, sir? Please, if I interrupt. Please. जैसे आपने कहा सर सिविक सेंस होनी चाहिए, मैं इसी मोटो में आ रहा हूँ. ये सिविक सेंस लोगों में कब आएगी? आपने कहा जब वो ब्रूम करते हैं, ब्रूम कर रहे हैं या मॉप कर रहे हैं अपना घर, वो कूड़ा जब उठा रहे हैं, उसके बाद उनको वेट करना चाहिए कि बाहर जब गाड़ी आएगी कूड़ेदान की तब वो कूड़ा फेंके, मगर वो नहीं करते. एज योर राइट सिविक सेंस होनी चाहिए, मगर वो सिविक सेंस आएगी कब सर? ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं. बदलाव, समाज को बदलना इतना आसान नहीं होता. यू विल बी सरप्राइज टू नो व्हेन आई बिकेम ए कॉर्पोरेटर, मेरे वार्ड से जो सर्विस चार्जेस हैं वो सिर्फ 300 रुपये जाते थे. 300 रुपये पूरे वार्ड से सर्विस चार्जेस, और आज की डेट में वो 1 लाख रुपया पहुंच गए. सो दिस इज अ चेंज. ये 300 रुपये जो आप बात कर रहे हैं, ये सब कब की बात कर रहे हैं? ये आई एम टॉकिंग ऑफ 2019 और 18. अच्छा, विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 years, it is gone from 300 to 1 lakh. 1 लाख. तो दिस इज अ चेंज. लोग चेंज होना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं वो नहीं चेंज होना चाहते, लेकिन इस चीज़ों में समय लगता है, क्योंकि हर आदमी ने अपनी सोच, एक्सपोजर, नॉलेज, एजुकेशन और उसको जो संस्कार मिले हैं उसके हिसाब से रिएक्ट करना होता है. कहीं पढ़ के सीख लेते हैं, कहीं देख के सीख लेते हैं, कहीं सुन के सीख लेते हैं. तो ये डिपेंड करेगा कब वो कहाँ से सीख लें, लेकिन सीख रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और वो जो 300 रुपया दिया था, तो मैंने कहा यार इस आदमी को ढूंढो जिसने मेरे कहे बिना ही यूज़र चार्जेस दे दिया. तो मैंने सेंट्री इंस्पेक्टर को भेजा. उसने कहा सर आदमी का पता नहीं लग रहा. तो मैंने कहा आप ऐसा करो, है इससे चीफ अकाउंट ऑफिसर से पता करो कि ये कौन सा व्यक्ति है. तो पता लगा कि मेरे ऑनरेरियम से ही कटे हैं वो 3 महीने के मेरे कट गए. तो तब से लेकर आज तक देखो कितना चेंज आया. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छी सी. इस बार साख का जो विसर्जन होना था, तो हमने अपील की कि इसको रिवर में मत करें, क्योंकि वो हमारी एक वाटर बॉडी है और जिसका पानी भी हमने इस्तेमाल करना होता है. तो पब्लिक ने कितना कोऑपरेट किया कि उसमें उन्होंने विसर्जन नहीं किया और सबने नहर में किया. तो दिस इज़ ए चेंज, छोटी बात नहीं है. और हमने उसमें से 25 ट्रक पूजा का सामग्री वहाँ से लिफ्ट करके कैरेज करके उसको भूस मादी दी. और जबकि ये सारा वाटर बॉडी में जाना था, इससे रिवर भी साफ होगी और कैनाल भी साफ हो गया. तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन. तो लोगों ने उसको मानते हुए इसमें भाग लिया और हमारे आह्वान का समर्थन किया. तो इसलिए देयर इज़ अ चेंज. लोग चेंज हो रहे हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उनका सिविक सेंस बढ़ रहा है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. नहीं सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला. दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. एज यू आर राइट, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. रोम एक दिन में नहीं बना था, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है सर, मगर अब चलो ये तो आप कह रहे हो सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर. बट आर टीम सर, जो हमारी TLN की टीम है, द लेटेस्ट न्यूज़ पोर्टल, जो हमारी टीम है उसमें सोनिया जी आती हैं, उसमें भानु जी आते हैं, उसमें JP जी आते हैं, उसमें आज़ाद जी आते हैं. देयर मैनी पीपल. आई हैव गॉट, ट्रस्ट मी, आई हैव गॉट मोर देन 40 पीपल इनटू माय TLN पोर्टल राइट नाउ. और अभी मुझे ये स्टार्ट किए हुए इट्स नॉट इवन बिन अ मंथ, 1 महीना भी नहीं हुआ. मगर सर, बाय योर परमिशन एंड बाय योर प्रेजेंस, मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ, किसी और से नहीं, ना आपके बंदों से, मगर जितने मेरे बंदे हैं उसमें मैं खुद भी शामिल होना चाहता हूँ. और जो जगह गंदी हैं वहाँ उन जगहों को मैं साफ़ करना चाहता हूँ. आप ऐसा करो ना. Now we are taking a initiative for banning polythene bags. मैं उसकी मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ. ठीक
उसमें आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व schools. Then we going to have a run for this also, and then a conference. ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं और उसमें स्टूडेंट्स को अवेयर करते करते हम उनके घरों तक पहुंचेंगे और पॉलीथीन को बैन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे. और आप देखना हमारा जितना भी ड्रेनेज होता है उसमें 60% पॉलीथीन ही होता है, वही ब्लॉक करता है और हमारे वाटर बॉडीज़ भी इन सब चीज़ों से भर गए हैं. इसकी समाप्ति के लिए आई हैव चाक आउट ए वेरी बिग प्लान इन एसोसिएशन विद द अमर उजाला ग्रुप. Yeah. Okay. So we are taking initiative for the welfare of the public, and public is also supporting the cause that has been undertaken for the efficient and transparent working systems, and especially for preserving water bodies and our drainage system. सर ड्रेनेज सिस्टम से सर मुझे एक चीज़ याद आई. सर ड्रेनेज सिस्टम से सर मेरे हिसाब से एज पर माय परसेप्शन सर यहाँ पर ड्राई और वेट अलग होना चाहिए सर. आप समझ रहे हैं सर ड्राई और वेट में क्या कह रहा हूँ. I have got your point. We are going to do it. As I told you, first we will make our students aware of this whole process. They will go to their homes and discuss these things with their parents. Then we are going to involve the housemates, then the female inhabitants of the house with our IEC team. We are going to do this. We have chalked out the plan, and you will see there will be a change, and our whole system of this garbage collection and disposing it off, that will be much better than it is today. Very true, sir. And true, sir, as I'm a very frank guy, I don't want to see it. I want to be a part of it. Without any acknowledgement. मुझे कोई acknowledgement नहीं चाहिए सर किसी से. I want to be a part of it. आपका ये स्वच्छ जम्मू जो है, I want to be a part of it. I want my TLN group to be a part of it. आपको जहाँ जहाँ मदद चाहिए हम आपके लिए हाजिर हैं. सुबह शाम रात वी आर जस्ट अ कॉल अवे सर. एक बार आप You are welcome. You are welcome. Thank you so much, sir. And sir, we can even help you with the boards if you want. Boards मतलब जिसपे हम लिख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान, एंड साथ में एक मोटो लिख सकते हैं. मतलब एक वार्निंग साइन, मतलब डराना नहीं है हमने किसी को. एक नॉर्मल सा एक डिस्कशन करके एक वार्निंग साइन लिख सकते हैं कि यहाँ गार्बेज मत फेंकिए, वॉट एवर इट मे बी. मतलब इट्स गोना बी अ ग्रुप डिस्कशन. मतलब एक कमेटी बैठी है, ग्रुप डिस्कशन हो रही है, हम उस पर एक वार्निंग साइन लिख सकते हैं. एंड उसके सबसे नीचे हमारा मेन मोटो सर क्या होगा? आई कांट वी कैन. सर मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ सर. बंदा अकेले नहीं कर सकता सर, अकेले जीत नहीं होती. इट्स अ प्रोग्राम means program of anything. Any billionaire, you go to any billionaire, you go to any multi-millionaire, जिन्होंने जितने पैसे कमाए हैं, एक बंदा पैसे नहीं कमा सकता सर, पूरी टीम होती है सर. पूरी टीम, एक बंदा काम नहीं कर सकता. इट्स अ प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड. आई कांट वी कैन. जब तक हम वी में शामिल हैं तभी कुछ हो सकता है सर. आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? आपका कहना सही है. पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी एफर्ट यू अंडरटेक, एंड द पब्लिक हैज़ शोन अस द राइट वे टू गो फॉर दिस इश्यूज एंड क्लीन जम्मू. चलो. एंड नाउ ये तो पता ही है. दिस इज वेरी कॉमन. दे ऑलरेडी डूइंग ऑल दिस. या
encouraging people. I mean, they are encouraging people to use dustbins from last 2 years. From the time I know sir has joined. they कैसे आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, एक दिन में अवेयरनेस नहीं आती. वार्निंग साइंस बनेंगे, ठीक है. फाइन हम लिटरिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि सर अब आई वुड जस्ट टेक 2 more precious minute of yours sir. ठीक है सर. सर मेरे हिसाब से सर कितने सर पहले 21-22 वर्ड्स थे, फिर इंक्लूड हुआ वो रजौरी वगैरह. अब सर अब हाउ मेनी 25 वर्ड्स आर देयर सर? 75. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 75 words means there are 75 cooperators. Exactly. तो सर कभी ऐसा हुआ है कि 75 और 75 में से मेरे हिसाब में से सर 44 बीजेपी के हैं, 44 बीजेपी के हैं. Yes. 7 इंडिपेंडेंट हैं. No. That tally has gone down because some of the independent candidates, they have joined the BJP. Okay. What you want to ask me, I know. I have a support of everybody, Right, sir. irrespective of the party lines. Okay. When I stood for a mayor, Okay. we had only 44 votes. Only 44 votes 44 votes, right? of BJP, Or BJP, right, sir. BJP corporators, but I got 57 votes. Congress boycotted the proceedings. नहीं ये So- मुझे पता है. so- उन्होंने बॉयकॉट किया था सर, ये मुझे पता है. Boycott is also a indirect support. Indirect support, right, sir. Right, sir. So I got 57 votes when we have only 40. Achieving 57 votes is a big achievement, sir. That's why I'm telling you, I have a support irrespective of the party lines. Right, sir. Everybody supports because we are here in a mission mode. I am for a mission. So by virtue of my deeds, they support my issues. I am always for the public issues and revamping of our existing systems, how it can be better. So I always work for that. That's why you have seen all these initiatives within a span of 4 months. 4 months. I am on the chair just for the last 4 months. I know, sir, from the last 4 months. You will be surprised to know this year we have spent 107 crores. And No, sir, come again, because people want to know this. Come again, sir. Come again with the amount, sir, please. this year we have spent 107 crores, and this much expenditure was not done in any of the previous years, right from the last 7 years. I have data with me, and at the most only 38 crores were spent. But this year I have made it a point to spend 107 crores, and in smart city projects we have spent 241 crores, and this is the highest ever from the last 7 years. So you can imagine how we are working from since morning to the evening. Since last 4 months. Since last 4 months, Right. right from 9 a.m. in the morning to 11 p.m. in the night. So things has moved very fast in a very oriented and transparent manner. So I congratulate all my team, including Commissioner, and to the Safai Sathi, and my all corporators, standing committee chairmen and deputy mayor, because this is a very big tribute to the public Right, sir. for what we have come here, and they have given their mandate for the best performance. Right, sir. So true, sir. So last question I want to ask you. This is a bit off topic, but very common these days. सर आप भी थक गए होगे ये क्वेश्चन सुन के, बट मेरा पूछना बनता है सर. सर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था सर. ये प्रॉपर्टी टैक्स का क्या प्रॉपर्टी टैक्स का क्या मतलब प्रॉपर्टी टैक्स व्हाट इज गोइंग ऑन?
ये प्रॉपर्टी टैक्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स बिन इनिशिएटेड फ्रॉम 1 अप्रैल, राइट? ये अभी 1 अप्रैल से लागू हुआ है. मतलब आधे बंदों को तो पता भी नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स देना है नहीं देना है, प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, प्रॉपर्टी टैक्स की मोडस ऑपरेंडी क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स देना क्यों है भाई, हमें क्यों देना है. और आपने कहा था, जहाँ तक मैंने सुना है सर, आपने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स J&K में लागू नहीं होने दूंगा. तो सर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ. आई एम नॉट गिविंग यू अ डाउनर हैंड. मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीज़न था कि अ पर्सन लाइक यू couldn't stop the motion. See, draft of a property tax was not brought in a house, general house of a corporation. You know, before making an act, draft has to be brought, but it was not brought in a house. So we have not introduced the property tax. We are living in a democracy, and we have a 3 tier of democracy. Local bodies, legislative assembly, right, and the parliament. If parliament passes anything, that has to be implemented by the legislative assembly. And if legislative assembly passes anything, that is to be implemented by the local bodies. So everybody is functioning in its own jurisdiction. So we have been superseded. So it was implemented by the administrative council, since we don't have a legislative assembly over here. तभी मैंने बोला I'm going a bit off track. मुझे पता है. So we have not brought it. We have not brought it, because had we done it, then it must have come through the house by putting a draft in the house, then discussion, then voting, then it would become a act. Right, sir. But this was not a process. So I am not responsible for that. Right. But if neither am I blaming you, sir. So if the administrative council directs for anything, that is to be implemented, because we are in a democracy and every institution has its own role and functions. नहीं सर, वो तो आपकी बात ठीक है सर. ये जो यहाँ पर जिन लोगों को समझ नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, ये जो रूरल एरियाज़ हैं सर, छोटे शब्दों में, छोटे उसमें आप समझा दीजिए प्रॉपर्टी टैक्स क्यों देना पड़ रहा है. रूरल एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा नहीं. अच्छा जी. ये विद इन द कॉरपोरेशन होगा 75 वार्ड्स में, और वहाँ भी जिनका 1000 स्क्वायर फीट से नीचे होगा कारपेट एरिया, उनको ये नहीं लगेगा, तो उसके ऊपर वाले लोगों को लगेगा. अब सपोज इफ़ आई रिजाइड एट न्यू प्लॉट्स, अगर मेरा एरिया 1100 स्क्वायर फीट है तो मुझे मात्र 444 रुपये देने पड़ेंगे. तो वो कितने रुपए हो गए? 60 रुपये के करीब हो गया एक महीने का. तो दैट इज अफोर्डेबल. एनुअली यू आर टॉकिंग. यस, इट इज एनुअली. तो दैट इज नॉट ए बिग गेम. नाउ वी हैव ए 2 paths. Either we be a progressive society or a, you can say, confused society. Everywhere, every part of a country and even abroad, you have a property tax. Because local body institutions, they have to take it. Otherwise, how will they survive? No, moreover, the income that will be coming from the property tax, that will be roughly 20 crores. Right. We are spending more than 2,000 crores a year. So this is just to have an participatory and responsible approach to show to the center that we are trying to stand on our own feet. This is not a big game. When you are getting 2,000 crore of rupees from the center and you are collecting just 20 crores, that is just to give an impression that we are serious for our own strength and we want to stand on our own expenses. So that is a way, and this is a way, and this is the best way that is being adopted by the local bodies. You had been to the abroad, you see there, even schools, colleges, hospitals, they are managed by the societies, not by the government. Exactly. They are managed by the societies. Right, sir. We have to manage our systems. And how can you manage system unless until you have your revenue? And this is the area, and this is one of the resource of your revenue. Right. Thank you, sir. Thank you so much. Same here. Thank you so much
for taking out your precious time. One last question from my side. From your side. Hello. Mayor Saab, I'm sorry. I should not have intervened because my son has spoken much more. He was supposed to speak because you are the boss and he's just an upcoming guy. But still he tried his best to please you and yeah, it is only because of that. But now I have one personal grudge specifically against you. And what is that? I'll tell you that. Your corporators are not doing the job to the fullest. And if you want to have any sort of positive information or some sort of credible opinion of mine about your corporators, if you ask me next time, I'll provide you. Please take care of corporators because you are the boss, and the boss is always right, but sometimes wrong also. I'm sorry. Thank you. You want to say anything, sir? See, every corporator is working very hard. They are working day and night. They have even spent more than crore of rupees in their wards for executing the civil works. So they are doing their job, but sometime it may happen they may not be in touch with some of the localities. They must enhance their reach out. That is a point. But I'm sorry, Mayor Saab, I'd like to intervene you before that. I think probably from 1906, this is the same thing that any person coming into this political forum and like that, he says that yeah, some time has to be taken, Oh yeah, how many thousands of years you want to have? How many thousands of years you want to have? Now you tell me, you make a broad line, outer line of that and tell me, yes, now this is 10 years, 15 years, 20 years. No. 1906, I remember, if I know the exact history of the politics, this is what is happening. And a mayor like you, and see, I don't say everybody is uneducated, but everybody is educated, but you are at the highest realm of education. You know what is the figure? You know how many zeros have to be put to make 1,000, lakhs, crores, or billion, trillions and zillions and all that. So this is my request to ask you all the corporators that they should do the job maximum, keeping the finance in the picture, and the finance should not roll in and out. I'm sorry. Thank you. You want to say anything? See, we are working very transparently, and you may not be knowing, we have even terminated few of our employees that were doing some misdeeds. The system takes time to change, and so is here. In a democracy, it is not always my way or highway. You have to move with the collective efforts, with the participation, and with a sense of responsibility, because it's a huge society, be that by corporators or our own society, civilians. So we have to move in a very cautious and in a way that it doesn't hurt anybody. Otherwise, the things will go out of hand and the desired result will not come out. You have seen the autocratic governments and you have seen the democracy also. You see, autocratic governments have always failed, and it is a democracy that has won. It may take time, but definitely it will win, and that is a sign what the Jammuites has shown. Thank you so much, sir. Thank you so much for your precious time, sir. Thank you so much. This was exclusively done by the latest news, and this is the end. It was our Honorable Mayor, sir. Thanks for hearing us.